Hello everyone, I am Harshita Goyal, a PhD research scholar and published author at Amazon KDP. Today, I will be presenting research design, which is one of the most crucial foundations of any research study. In this presentation, we will understand what research design is, its different types, and how to choose the right one for your research. So, without further delay, let's get understand. Content. Here is an overview of what we will cover today. First, we will understand what research design is and why it matters. Then, we will discuss four major types: exploratory, descriptive, explanatory, and experimental. After that, we will compare these design and finally we will learn how to choose the right research design. Research design definition and purpose. Research design is the overall plan or a blueprint of a research study that explains how the researcher will collect, measure, and analyze data to answer the research question or test a hypothesis. It ensures that the study is systematic, valid, and reliable. इट मीन्स रिसर्च डिज़ाइन से आप लोग क्या समझते हो? जिस तरीके से एक पर्सन अपने घर को डिज़ाइन करता है, अपने घर में कौन सी चीज़ किस जगह पे रखनी है, अपने ऑफिस को डिज़ाइन करता है, कहाँ पर फ्लावर पॉट लगाने, कौन सी फाइल किस जगह पे रखने हैं, उसी तरीके से रिसर्च डिज़ाइन में जो रिसर्च होता है वो अपनी पूरी रिसर्च को डिज़ाइन करता है कि उसको डेटा कैसे कलेक्ट करना है, कैसे एनालाइज करना है, कहाँ से कलेक्ट करना है, हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करना है, किस सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना है, राइट तो ये हमारी क्या होती है? रिसर्च डिज़ाइन इसको हम बोलते हैं, जो कि हमारी पूरी रिसर्च का एक ओवरऑल प्लान है और ब्लूप्रिंट है. इट्स स्पेसिफाई व्हाट योर ऑब्जेक्टिव आर, who your target population is, what data you will be collect and how you will analyze it. Why it matters? Because it ensures clarity, your study stay focused. It's improve validity and reliability, reduce biases, it's ensure efficiency, saves time and resources, it support reproducibility, other can verify your study. The flow explanation. The process of research design is first question, then design, data analyze and findings. It's called research design. Types of research design. First is exploratory research design, when the problem is not yet clear. So, exploratory research design is generally used when the research problem is new, unclear, or has limited prior literature exist, and researcher wants to gain the initial understanding and knowledge. The key characteristics of exploratory research design include: it is flexible and open-ended, its use small samples and mostly qualitative in nature. Its method include literature review, interview, focus groups, and a case study. Outputs: its help in developing research question, variables, and initial hypotheses. For example, if you are exploring a new social issues or a new product idea, is called exploratory research design. Next is descriptive research design, measuring what and how much. Descriptive research design is generally used to describe the characteristics of a population or phenomena. The key characteristics include structure. It is structured and systematic. Variables are observed, not manipulated, and its use larger sample. The method used in research design is survey and questionnaire, structured observation, and cross-sectional study, where we collect data only one time. Output: it's provide statistics, profiles, and trend. For example, studying employee satisfaction level in organization. It is the example of descriptive research design. Explanatory research design, which also called causal research design, understanding why relationship occur. Explanatory research design is generally used when we examine the cause and effect relationship between variables. It's mainly focused on why something is happened and how variables are related. The key characteristics include: it is theory driven, more structured, and often quantitative.
In this research design, we generally used method experiment, structural equation modeling, regression analysis, correlation studies, longitudinal, etc. The important concept introduced here is independent variable, dependent variable, mediator or moderator. Output, its developed relationship, model and hypothesis. So एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिज़ाइन का मेन काम क्या होता है? कॉजल, ये जो हमारी स्टडी के वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है कि जो एक वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल को क्यों और कैसे अफेक्ट कर रहा है. इट इज़ कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिज़ाइन विच ऑल्सो नोन एज कॉजल रिसर्च डिज़ाइन. Experimental research design, testing cause and effect. This design involves manipulating one variable to observe its effect another variables under controlled condition. But आपको यहाँ पर एक डाउट होगा कि मैम जो हमने प्रीवियस रिसर्च डिज़ाइन पढ़ी थी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिज़ाइन, उसमें भी हम कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप की स्टडी कर रहे थे और इसमें भी, तो डिफरेंस क्या होता है समझते हैं. जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिज़ाइन होती है जिसको हम कॉजल रिसर्च डिज़ाइन भी बोलते हैं, उसमें हम सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं कि जो एक वेरिएबल है वो दूसरे को क्यों अफेक्ट कर रहा है और कैसे अफेक्ट कर रहा है. लेकिन उसमें हम किसी भी वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते थे. लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में हम एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, तब उसका दूसरे पर इम्पैक्ट चेक करते हैं अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन. तो इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की वो क्या होती हैं? इट इज़ हाईली कंट्रोल्ड, यूजेस रैंडम असाइनमेंट, इंक्लूड्स कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स. The method include lab experiment, field experiment, randomized controlled trials and quasi-experiment. Outputs, its measures treatment effect. For example, if we are providing leadership training to one group of managers and comparing employees' outcome with control groups is called experimental research design. Comparing exploratory, descriptive, explanatory and experimental. Here are the quick comparison of each research design. First, research stage. Exploratory research design is generally used early research stages. Descriptive is intermediate और explanatory और experimental research design को हम यूज़ कब करते हैं? एडवांस लेवल पर. एक्सप्लोरेटरी को हम अर्ली रिसर्च स्टेज पर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो मेन मोटिव होता है वो तब होता है जब हमारी प्रॉब्लम अनक्लियर होती है, उसके बारे में रिसर्चर को इनिशियल अंडरस्टैंडिंग गेन करनी होती है. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर. द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन इज फ्लेक्सिबल, डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर्ड, एक्सप्लेनेटरी स्ट्रक्चर्ड एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इज कंट्रोल्ड बिकॉज हियर वी मैनिपुलेट वन वेरिएबल एंड चेक द इम्पैक्ट ऑफ अनदर वेरिएबल अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन. Data type. Exploratory research design is generally qualitative. Descriptive can be qualitative and quantitative also. Explanatory mostly quantitative and experimental is also quantitative. Causality claim. Exploratory research design में कोई कैजुअलिटी क्लेम नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हम कॉज एंड अफेक्ट के रिलेशनशिप की स्टडी नहीं करते, ना ही डिस्क्रिप्टिव में करते हैं. एक्सप्लेनेटरी में हम करते हैं, राइट, ओनली इफेक्ट चेक करते हैं हाउ एंड वाई का. और एक्सपेरिमेंटल में तो इस्टेब्लिश होता ही है क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल मैनिपुलेटिंग होता है, किया जाता है और दूसरे पर इम्पैक्ट चेक किया जाता है. टिपिकल डिलीवरेबल. एक्सप्लोरेटरी क्या डिलीवर करती है? हाइपोथेसिस, डिस्क्रिप्टिव प्रोफाइल्स, एक्सप्लेनेटरी मॉडल्स एंड एक्सपेरिमेंटल इज इफेक्ट. हाउ टू चूज द राइट रिसर्च डिज़ाइन. फर्स्ट, आइडेंटिफाई योर रिसर्च क्वेश्चन टाइप. If your problem is unclear, then go for exploratory research design. If you want to describe the characteristics of the population and the phenomena, then go for descriptive. If you want to identify the cause and effect relationship without manipulation, then go for explanatory. And if you want to check cause and effect relationship, also manipulate the one variable, then go for experimental research design. Second step is to evaluate practical constraint. Ethics, can you manipulate variables? Feasibility, time, cost and access. And third, data availability. Third, select a design based on knowledge level and control. If you have low knowledge,
then go for exploratory. If you have moderate knowledge, then you can use descriptive and explanatory. But if you have high knowledge, then you can choose experimental research design. So the conclusion is, the better your design, the stronger your research outcomes. क्योंकि research design is a blueprint and the overall plan of your research. Thank you for your attention. I hope this video helped you to understand research design clearly, and I would be happy to take any question. If you found this video is helpful for you, then you can appreciate me by like, subscribe and share. Thank you so much.